Dr. Shahnaz Nalwala, and my esteemed colleagues of Jasna-e-Dastan-e Mumbai. Today's speaker, Bombay Ka Shan, Aslam Sayyed, is an independent photographer and an extraordinary documentary maker. He Okay. learned photography and holds a diploma degree from JJ Institute of Applied Arts. He was the technical general manager as You need well as to communicate clearly of that photography at you are not, Sandbox Animation yeah, Visual that Effects the voice Limited. will not come from you now. He has been a visiting lecturer for Uh, history and documentary photography at Ramesh Sippy Film Academy, Equal Institute Lab, Shift, Shift Focus School of Cinema and Life and uh, Cinema and Life and Nirmala School. Besides, Aslam Sayyed is a co-founder of Hallu Hallu, a walking project believing in walking, observing, conducting a city visual interaction program for art and architecture. His architecture students, sorry. His other most exceptional work is documentation of Mumbai's river under the name of Mumbai Rivers, under the name of Mumbai Rivers Photo Project, aiming to create awareness that Mumbai has rivers and also to support the Warli, Kohli, Agri, and other communities. He organized 25 street exhibitions along the bank of the rivers and Gauthams of Mumbai. So, on behalf of Asiatic Society Mumbai and Mumbai Research Centers, Jasna-e-Dastan-e Mumbai, we welcomes you, Aslam Sayyed, most welcome. Thank you, Renuka ma'am, and thank you Asiatic Society and everybody who and Praveen who invited me to talk here. It's my honor to talk here and to show my whatever work I have done on rivers and what I want to convey from this project. So let's start with it. Basically, the ma'am has given the introduction. I have done my engineering from Sabasidi College long back, and I also learned animation. And I'm working as an animator last 15, 16 years, and become a photographer last 10 years. And this story about rivers is basically is a story of myself and how I discover rivers of Mumbai. So this is not a project. This is something is a part of my life that I wanted to share with you. Okay. So we'll start. I live in Borivali. I lived in Borivali. Now I'm shifted to Kandivali, and there is a Borivali National Park in Sanjay Gandhi National Park, close to my house, and this is story about that. So let's start. I'm sharing my already shared, I suppose. Can you all see the PPT? No, you'll have to share your screen. Yeah, I'll do that. Okay. Okay. So that's the journey. Can you put? Sorry. Yes. I just wanted to tell you to put it in the presentation mode. This is a presentation. No? Sorry. Can you see the PPT? Yes, we can. Should I continue? You wanted Sure. to? Yeah. Okay. Sure. Okay. So this journey of Mumbai has rivers is a part of my story. So let me start with it. In 2016, I started photography 2011 and something, and because I was a photographer, I started going visiting places. And since I lived in Bombay, Borivali, and in Borivali there is a national park, and we used to go national park on a regular basis. We used to play cricket, do swimming, and like that. But when I became a photographer, something something good happened to me. Was I started looking or seeing much and in more detail,
And one fine day when I was walking to Canary Caves, I saw a girl, and she was washing clothes on the bank, on the water, near a water body. And I asked her ki, like, what's her name? She said Aarti, and again asked her what she's doing here and who are you, like that. So she said, I live here only, uh, and I go to college. So this was something I did not know ki people are living inside national park. And so I wanted to know about how does she goes to college. So she said, I go by cycle. And this where she was living, that was that pada, that hamlet is called Chunapada. That's 7 kilometers inside national park. So I was wondering how she goes, and she goes by bicycle. So again, she used to go. She used to go to college, SNDT college, which is in Malad. So again, I think overall some 10, 13, 10, 12 kilometers every day she used to cycle from that place. So I was very curious, and I went inside that pada. And again, there were some more children. They were waiting other children to come, and then they together they can go to school. So uh, go to school. And these children every day they walk 14 kilometers just to go and come back to school. So this incident was a turning point in my photography journey, where uh, I wanted, like, these children, they live in Mumbai city, and they don't have a public transportation. They don't have a school inside in their area. And this was a shocking moment for me. And I wanted to know more about this community. What is this community? Where are they living? And why this is happening? So this is the journey, how journey started. So I'll share my project now. So before we go to how I started, who are those people? Let me ask people, uh, how many rivers in Mumbai? There are how many rivers? Can you name few rivers of Mumbai? Okay, so everybody on mute, but everybody, like most of the people know Meethi River. And most of the time people say, yes, they know river, and that's Meethi River. And there are few more people, they will say there is Dahisar River, there is uh, Boisar River maybe. But for me, like, there are many rivers in Mumbai. So I'll just tell the names of those rivers. Yeah, everybody knows Dahisar. This Dahisar River starts from National Park, it travels north and goes into the Gorai Creek near Dahisar Gauthan. Then we have Boisar. And we are going to talk much about these rivers and how their journey from national park to the sea happens. Then there are many more. I don't know what's the definition of a river or a nala or a stream. For me, anything which is organic and which start from a place and empties in the sea or something in Mumbai, maybe. I call it river because this is not man-made. This is actually geographically, because of the geography, these streams have been developed. Okay. So there is a Malad. Malad में ही 2-3 rivers हैं, Kachpada, Malad, and I don't know if these are given names are given by BMC. These all given by me only because I did not find any names. So I've started giving my own names to these rivers. So there is a Oshivara. Oshivara is called as Walbhat. Okay, that goes through Goregaon, starts from again RA and National Park, goes through again from National Park, it start and goes through RA. Then there is a Mogra, it starts from Mahakali and goes into again Malad Creek. So we are going to see some more pictures of Mogra River. Then there is a Wakola, it again meets to Meethi River, Irla hai, Govandi hai, and there are many rivers. ऐसे बहुत सारे rivers है. So in like I started working from 2016. I'll say that I've just started working. I've not मैं कहीं नजदीक भी नहीं पहुंचा हूं मेरे प्रोजेक्ट खत्म होने के पास में. Okay. So mostly all these rivers, they come for a forest national park because this national park area is on the high altitude. तो वहीं से काफी सारी नदियां निकलती है.
Okay, so coming to Aarti again. So I basically started my project because of this girl. I was talking about this girl. Her name is Aarti, and every time I talk about this girl, and so she was washing on the bank of river. That river was Daisar River. I did not know before that. So this was a picture I shot uh, that day. This is not a river exactly. This is a well close to the river. It is fed by well, river only. So this is a starting picture of my project, 2016. So this is how Aarti goes to college after her daily household work. And these children outside Pada. Pada is a colony of Adivasi. Okay, not exactly village, not hamlet also, because Pada Adivasi doesn't live in cluster. Basically, actually they live in their farms. Okay, तो उसको पाड़ा बोलते हैं. So these are the children waiting outside, and they every day they walk 6-7 kilometer one side to the school. So this is a small boy, and now he has like in the center you can see Vishwanath. His name is Vishwanath. He was 5-6 years old that time, and this is how journey looks like through the national park. And in between they take a halt, see, like they were telling me there is a baby crocodile or stuff like that. So this is Aarti's house. So finally, when I met these boys and these children, I planned, I venture inside Pada and saw what is happening in Pada. Okay, so this is Aarti's washroom, Aarti's toothbrush, Aarti's house, her cosmetic, grandfather, grandmother, photos, her bag. Aarti also helps her parents on holidays, on weekends. Her parents, they sell fruits in National Park. This is very close to Canary Caves. Okay. So when I ventured in Adivasi Pada, Chuna Pada, what I saw, I found a lot of children in the Pada. And there were only like, and nobody was there. Like not many people were there in the Pada. So I saw a lot of children because the elders or the parents, they go to nearby housing society to work as a maid or a housekeeper. And mostly these children are looked after by their elder children or the pets. So this is again Aarti's smaller sister, where she's enjoying the water of the river. And this is their daily routine. And I found them very privileged. When we see them, we say they are underprivileged. But for me, they are very privileged to have a river to bath. Right? We don't have like we are not that lucky. I will say. We come to this. I'm slowly taking you into more detailed thing. So these are the elder children which are looking after the smaller children in Pada. They don't have school inside, no public transportation, no electricity also. Though the national park has the electricity, but Warli are not supposed to use electricity. Aisa hai, no tap water. So that was shocking to me. The richest municipality of Bombay can't give citizen basic amenities. Though they can vote, but they can't have water and other facilities. Okay. I'll start with this picture. This was again like I then from 2016 I keep on going there. But this one picture, this completely tell about us, about Bombay, about how we see Bombay basically. So here, if you see it properly, and people are who using mobile phone, just they can just zoom in like this. You can see that on mobile you can zoom the picture. I don't know if you can zoom in on your desktop and all. But this is Chunapada, and there is a dam in the center. You can see a dam, and on the right hand side,
there are people who come and visit national park on holidays. On the left hand side, the children of the village are playing. Okay. So I connect myself to right hand side people where we go with our family, we take our tiffin boxes, lunch boxes, and we spread a carpet and sit there and enjoy the water, enjoy the greenery, and we go home back. But with me also, this happened like almost entire my life, whatever I've lived. And these children were invisible to me. These children were invisible. I did not bother to ask him, who are you? And so, so basically the tribals of Bombay are invisible. Like I think every day, a hundred of people, they visit national park, but we don't care to talk to them. So this is Bombay, the elite Bombay, educated Bombay, where we talk about the architecture, we talk about Gothic culture, Gothic architecture, Art Deco, and a lot of things. We talk so many things. But when it comes to like in wildlife, even the wildlife enthusiast, I've seen many. They are not concerned about Wali people, and they are simply concerned about the wildlife of national park. So this is what this picture actually also uh, given me a food for my thought. Ki, this is something I have to do with this. So I started my project called Mumbai River Photo Project. So my project is just not about the geographical river. It's not about the water body. Just not about the water body, but it's about the people who live along the river. So basically, everything river is just not a river. River has stories, and that has to be told. So who are the people who live along the river? So in Mumbai, there are Wali people. If you see all the padas, and if you map them, so you'll see these padas are all along the rivers, mostly North Mumbai and eastern part of Bombay. Okay, and they have been living along this river. There are rice field, paddy fields along it. There are palmera trees along it, and and when these rivers they empties in the sea, there are coolies and agris living at the end of the rivers. So basically, this project is dedicated, or I wanted to tell ki Bombay city is very popular or famous for Bollywood, Gate of India, and a lot of Art Deco things and a lot of other stuff. But this Bombay actually belongs to Wali people and Koli people, and I have to with this project I want to tell other people, outside people or everybody, ki these are the symbol of the people, and come on, we should acknowledge them. This is the only thing I wanted to do with this project. So now, whenever like even where I live in Thakur village in Kandivali East, that area is also now it is called Thakur village, but that area was a pada. Okay, that area is named as a was a, like we have a small area given to the pada people when the builders of that area uh, took away that area, and the pada people was actually driven away, but somehow like court gave them some small area, and that is Keli pada. So each one who is living in Bombay, in North Mumbai, basically, maybe you have to see what area you're living, and your area was once upon a time a pada, and you please find it out what pada it was, right? So yeah, so this is how I started my journey. So let us see some pictures which I shot throughout all these years. I'm showing some of the pictures. So before I start, I wanted to read from a book, Ben Okri's In the Flemish Road. In the beginning, there was a river. The river became a road, and the road branched out to the whole world. And because the road was once a river, it was always a hungry. When I read this first time, I did not understood that time. But gradually, when I did the photography, the documentation, I completely understood what it's supposed to be, what is supposed to be meaning of it. So I have like I'll gradually you'll understand. We'll come back to this again. I'll read it again when we see the pictures.
So this is one of the pictures. This is at Canary Caves. There are 2, 3 water tanks, water harvesting tank on the top of the Canary Caves. A Wali lady is. It was very hot summer, and Wali lady was not from national park. She was a visitor from Palghar, and she is is cooling off basically. She wanted to cool her off. That was one shot where this is also a source of Dahisar River. When the water from this water tank overspills, it goes to the Dahisar River. This is a man from Konkan. He lives in Borivali West. He came with his children, grandson, to show how the rivers look, how the river look like. So this is inside Sanjay Gandhi National Park, Dahisar River. This is again on the top of Canary Caves. National Park is again very popular among the college students and all. They have some good moments at this place. An elderly couple sitting along on the side of the Dahisar River. They are sharing earphones, listening to some music. So how, like, I just wanted, we'll gradually when we move, while you'll get to know why I'm showing this picture. This is a closer shot of those children where I showed in the last few pictures away. That children are enjoying their after school. They come, throw their bags in their houses and come back at the river and they have fun. This is again one of the like scene where I can see in the mostly in Adivasi Padas where a religion, a missionary want to tell them ki you belong to this religion. So I can read also this on the flag. It is written "Hoy me Hindu ahe," and yeah. So I have a video where the Wali themselves are telling ki what religion they follow. So I'll show that video also to you. So this is Aarti's sister, and she like is getting ready for school. Aarti's mother and parents, they are celebrating. Recently they started celebrating Navratri, like 2016 it was. This was the second time they celebrated. So they are crossing Dahisar River, and this side there is a Navapada. These are the crabs. A young child is holding them. Again, Aarti, Navratri celebration. Then this Adivasi, they depend on the forest for their daily things. So there is a small girl who is carrying firewood, and this picture is very important picture where it depicts where this is a part of national park where tourists are allowed, and again this when even when I was small, I must have seen this women, that time the women and the children, they are carrying the firewood, but I did not see them. I did not bother them because when I started photographing, I started looking closely in detail, and that's how I discovered these people. So even here, people are not concerned ki who is this person carrying firewood. This again Dahisar River. There are a lot of interconnection between the padas. So there are food seller, there are cloth seller, there are fish wala, machi wala. They travel pada to pada, and they have their own connection, their own roots, their own communication, way of communication. Before, like national park was like formally it was announced in 1980s, and gradually the small forest national park was declared a park around independence time, but the area was very small and gradually it became bigger and bigger, and because of that a lot of Adivasi padas got into the reserved area, and whatever their Adivasi rights were gone, because Adivasi, they are supposed to farm, rear the animal, hunt animal, do vegetation, do farming and all. But because they are now in national park, all their rights of depending on forest have been gone, and now they have become dependent on the city.
Okay, so this is how we made them dependent, because they Adivasi don't need us actually. So now even this is a Warli art where Aarti's brother has drawn art with the chalk. Now basically this art is going away. This is a chicken intestine on wound on the stem. This is used to catch the crabs. Ganpati festival भी मनाते हैं वो लोग. And you can see there is a tablecloth is in Varli. There is a Varli art on the tablecloth, and there is a, for me it's a like it's a contradiction where they don't actually do mainstream prayers actually, but now they started doing it. This is like in on the top of the tree there is a boy called Babu. Every time I go into national park, I see him. He basically has a herd of goat, and he's a shepherd basically. So he tried to give best of food to them. This was a Adivasi day celebration in national park. I also like to photograph small thing between these two pair of chappals. I see there is something written is I love you, I miss you. So these are small things which I really like to see them and document them. This is a form of their praying place. They call it as Deul. So mostly they have Agoba and Gavdevi Devus. And this is the basic form of their worship temple. And gradually when this padas, like now this pada is in national park, that's why it's safe, or this temple is safe. But if I see the same temple in Thakur village or in another urban area, this become, they make walls, then they put up lot of idols. These stone idols are replaced by the mainstream idols. Then there are ghantis and all, and suddenly it becomes a very complicated architecture structure, and a lot of people they visit. Mostly their temples are open place, a lot of air is there, beautiful place. I also was the attention, the colors also took my attention. The colors are like which are, we are taught in art school, they are complementary colors. So I don't know what who told them to use this color. I think we have derived this color from them. So there is a lot of things we like I started understanding कि ये लोग तो स्कूल में गए नहीं है, तो इन लोग ने कैसे सीखा ये. तो या तो ऐसे हो सकता है कि इन लोग से हम लोग नहीं सीखा है, इन लोग को देखकर हमने अपनी थियरी बनाई है. सो दिस गिव मी लॉट ऑफ टाइम टू ponder कि ये क्या है, मतलब I started discovering things and started questioning my education with my project. This was the time, like 3 years back, the Hisar river was flooded, and this is close to National Park Gate, near National Park Gate, near highway, where the very close building, there were a lot of, the wall was collapsed, the compound wall was collapsed, and at least 20 cars were flown away in the Dahisar river. This is Dahisar river, Dhobi Ghat. Now they have made the wall. और ये पहले ये लास्ट 2 साल पहले की बात है. Now the word has come. Now the people are not washing clothes inside river. It was supposed to be like this. Now Dhobi Ghat is shifted outside. So I see this picture now. The river is walled now. But now if you can see the picture of river, this river, the bottom picture is inside national park, where there are no walls and children, there is a direct interaction between river and us. But here when the river come outside, we wall it. And when now this is very small wall, even now they are making very high very tall walls so that we don't see the water bodies. And accidentally or intentionally or unintentionally, we directly throw our garbage inside this river.
So, and we are cut off from the water body because the height is such a high that we don't see it. So automatically it becomes the sewer, and like the slum around along it, the industrial waste is also going inside. Okay. So these are the two contrasts of the same rivers. This is Dhobighat again. This is a Poiser River, the slum encroachment in the river. This is again Poiser River at Dhanukar Wadi. There is a Thakur Public School, and the uh, pillars of that school wall are on inside river. Okay, the other angle of the river. Now, what happens when they make wall? I've seen that when they make wall, they make the width of the river very short. The river was very big, right? And it has to be supposed to be like there will be no construction made inside red line blue line area, but यहाँ पे हम लोग red line blue line तो क्या पता ही नहीं है किसको क्या है, but ये जो पार्ट है लेफ्ट साइड का वो भी रिवर ही था, लेकिन इन लोग ने इसको और छोटा कर दिया है, इसका बेड भी सीमेंट का कर दिया है, तो जो जो वाटर ग्राउंड वाटर जो बढ़ना चाहिए वो भी नहीं बढ़ेगा और पानी रुकेगा भी नहीं. When in the monsoon that water directly will flow outside and it will the whole area like आजू बाजू का जो एरिया वो फ्लड जल्दी होगा, जल्दी फास्ट हो जाएगा, and that's also the reason behind the flooding of Mumbai. This is again the Isa River at the end where it meets Malad Gorai Creek. This is now how this like these children are not playing in the river because it's very dirty. But if you see children outside in the national park, they are playing. This is another shot from the Poiser River. This is Mithi River shot where it comes in Arabian Sea at Mahim Bay. The Isar River polluted at the Isar Gautan mangroves. This is one of the coolies who's living in Daisar Gautan. He's showing me his boat. Sometimes he goes for fishing just to because he is a fisherman, and now he no more do the he's following his tradition of catching fish because all these creeks, basically the coolies from Mumbai, they don't used to venture deep inside the sea. They basically used to fish inside the creeks, but because of the pollution, we now they can't fish inside the creek, and if they want to go into deep sea, they need a bigger boats and a lot of fuel and a lot of manpower. So they have stopped in the Hisargaon. At least they have stopped fishing. Mostly all the people have stopped fishing. And this gentleman is now a rickshaw driver. He has a own rickshaw. So I also have documented these people of the Hisargaon. So there are again two pictures where at Mahimbe and Daisa River, Mahimbe, these children are not Koli children or fishermen children. They are Pardi. They live at Mahim Koliwada, and this is inside Daisa River. This is Mogra River near Lakshmi Industrial Estate. Mogra is also a river that starts from Mahakali on the Goregaon from the hills, and it the name of this Mogra has come because there is a Mogra Pada in Andheri East. So it from Andheri East it goes to there is we have Andheri subway. वहां से होकर फिर ये लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एस्टेट से होकर लोखंडवाला से then it goes into Malad Creek. So actually this is such a case where we can walk on this river. इतना polluted, इतना कचरा है इसमें. This is Warsaw Beach. 2 साल पहले का फोटो है ये. So I have a video documenting why these creeks are like pollution is there. I'll show you that. I have to finish by 2:30, right? Okay. So before I start a few stories about river, let me show you some videos which I've made recently in lockdown. So I'll start with the Adivasi video. There are 2 Adivasi videos. So
let's talk about their art and culture and their habitat. मुंबई हे एक सुंदर बेट आहे आणि मुंबईमध्ये मधोमध जंगल आहे आणि त्या जंगलाचं संरक्षण करण्यासाठी वारली समाज आहे. आता हे वारली लोक आहेत आणि म्हणजे मी जिथे राहतो संजय गांधी नॅशनल पार्कमध्ये, इथे जेवढे पण पाडे आहेत तर त्यांना या बिल्डिंगमध्ये शिफ्ट करणार आहेत. ही SRAची बिल्डिंग मी दाखवले, त्यामध्ये धान्य कुटणाऱ्या बाया, हे सगळं जी परंपरा आहे ते विलुप्त होऊन जाणार. कोंबड्या कशा ठेवणार, गाई कशा ठेवणार, बकऱ्या कशा ठेवणार, हे रडताय, त्रास सहन करावा लागणार. चूल कशी पेटवणार, लाकडं कशी ठेवणार, अशा खूप साऱ्या समस्या आहेत की त्या मी इथे दाखवल्या. कोंबड्या बिल्डिंगवर, बकऱ्या बिल्डिंगवर. देशभक्त लोक तुम्ही ना, त्याग आम्हा काय मागता. अरे जंगल असे आमची आई, रक्षणात जीव जाई, रक्षणात जीव जाई. झाड तुम्ही तोडून टाकता, त्याग आम्हा काय मागता. अरे क्या है ना कि आदिवासियों के पास ही त्याग मांगा जाता है. और त्याग करो ना, ये जंगल है, थोड़ा त्याग करो, विकास के लिए त्याग करो, इस हमारे प्रोजेक्ट के लिए त्याग करो. अरे त्याग हम ही नहीं करना है क्या? और त्याग में, त्याग करने के लिए कुछ नहीं, लेकिन त्याग में हमारे जंगल जा रहे हैं, हमारे पशु प्राणी, हमारा अस्तित्व मिट रहा है, हमारी जमीन जा रही है. जंगल बनण्यासाठी हजारो वर्ष लागतात आणि ते जंगल टिकवून ठेवण्यासाठी सुद्धा लढा देणं खूप गरजेचं आहे. आणि हे एखाद्या सोयीसाठी, थोड्याशा सोयीसाठी हजारो वर्षाचं जंगल तोडणं म्हणजे खूप वाईट गोष्ट आहे. कारण जंगल फक्त माणसांचं नसतं, ते झाडांचं नसतं, त्यामध्ये प्राणी, कीटक, पक्षी हे सर्व राहतात. आता माणूस माणसाच्या संघर्षासाठी लढा देतो, केस लढतो आणि तो जिंकतो सुद्धा. पण इथे राहणारे जे झाडं आहेत, जे इथे प्राणी आहेत, आता आमच्या जंगलामध्ये वाघोबा राहतो, त्याची बाजू कोण मांडणार की अरे मला पण इकडे राहायचं आहे, किंवा इकडे राहणारे कीटक, पक्षी, त्यांची बाजू कोण मागणार. मेट्रो कारसेटसाठी झाडं कापली जात होती, त्यावेळेस आमची पूर्ण कुटुंब होतं ते झाडं तोडण्याच्या विरोधात होतं. आणि यामध्ये माझ्या आईला जेलसुद्धा झाली, त्यांना तुरुंगात जावं लागलं. तरी पण आम्ही हार नाही मानली, असा संघर्ष आम्ही कितीही वेळा करण्यास तयार आहोत. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जेव्हा तयार नव्हतं तेव्हापासून आम्ही इथे. One moment, I stopped playing actually. Wait. I'll play it again, last part. तर तेव्हापासून आम्ही इथे राहतोय, पिढून पिढ्यापासून राहतोय. आणि आम्हाला अशी भीती आहे, या माझ्या कानावर आले. Let me try once, then let me see how it is playing or not. I can continue with my presentation. I don't know why it's not playing.
Okay, so I'll come back again after some time. I'll start my. So basically, those videos were about the Adivasi people living inside National Park, and one of the speakers was Dinesh. He was showing his Adivasi painting where he's showing there is a SRA building, and the government or the authority, they wanted to relocate them to the buildings, SRA building, and he was trying to make us understand with his drawing that when a Adivasi family lives, it includes the hens, the dogs, the goats, and how if somebody has to shift to a SRA flat, how it's just impossible to shift everybody. So that was he was talking, and the other girl that she was from RA, she was telling their problem, like their connection with the forest, and forest is just not made in like few days by planting trees. It is as old like 1,000 years. It takes 1,000 years to make that forest. So I'll come to that video again. So let me go to the stories now. So, so while documenting the rivers, I came with many stories. So I'll start with one of the stories that I came across. There is a lady called Indira Bhende, and she is one of the oldest documenter of Dahisar River. So since 1990s, she's been documenting and fighting for the river regeneration. And because of her, I got to know about so many things about the Dahisar River. And very interested point she wanted to make is there was a Portuguese bridge on this river that was made by the Portuguese missionaries around 16th century. So this is a picture of that Portuguese bridge. थोड़ा और photo दिखाता हूँ मैं उसका. Yeah. So this is a old picture of Portuguese bridge. That area is called Mount Poisar in Borivali. Now there are a lot of schools, Portuguese schools, St. Francis and Mary Immaculate and other schools. So this was there till 2005. Suddenly what happened, the local corporated wanted to make a लोखंड का bridge बनाने का था उसको, तो उसको पैसा कमाने का रहेगा. And that's why he wanted to break this bridge. He wanted to destroy this bridge and make another one. तो ये ब्रिज अपना उस वजह से चला गया. Now this is again a very old picture, maybe 1980s का picture है. This is not that bridge. Here at the corner here, this is a Portuguese bridge, and even last time it, like when I saw it, it was a good bridge. मतलब it was a functional bridge. And just to like, it was also declared as a second grade heritage. So there was a dispute between among the municipality only कि इसको तोड़ना है कि नहीं तोड़ने का है. लेकिन उन लोग ने वो लोखंड वाला ब्रिज उन लोग ने बना दिया. And that लोखंड वाला ब्रिज was washed away in अपना 2007 का 5 का जो फ्लड था उसमें वो बह गया. ओके, लेकिन ये तोड़ के उन लोग ने नया ब्रिज बनाया. And that नया ब्रिज वो 1 साल के अंदर ही बह गया. ओके, सो दिस इज अ ट्रेजेडी लाइक वी हैव कि हम लोग अपना हेरिटेज जो था वो हम लोग ने संभाल नहीं पाए. एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी ऑफ दहिसर रिवर. ओके, सो दिस इज अ पिक्चर शॉट बाय इंदिरा भेंडे. ये इंदिरा भेंडे की माँ है और पीछे वो दहिसर रिवर है, ये दहिसर ब्रिज है, पोर्चुगीज ब्रिज. सो मे बी दिस वाज शॉट अराउंड सम 1970s का कुछ फोटो होगा ये. एंड दिस रोड नाउ हैज बिकम ए हाईवे. एक बहुत बड़ा नॉट हाईवे, इट्स वेरी बिग रोड. यहाँ पे रुस्तम जी स्कूल आ गई है और बहुत बड़े कॉम्प्लेक्सेस आ गए हैं इधर. ओके, एंड दिस अगेन ओल्ड दहिसर गावठान पहले का. तो ये कुछ पिक्चर्स जो इंदिरा भेंडे ने खींचे हुए फोटोज हैं ये. ओके, नाउ ऐसे छोटे छोटे स्टोरीज है, तो मैं एक स्टोरी पे आता हूँ. इट्स नॉट अ स्टोरी, इट्स माई फॉर मी इट इज समथिंग न्यू विच आई एम गेटिंग एजुकेटेड माई सेल्फ. वैसा है. तो ये कुछ स्टोन्स है
जो मेरे को दहीसर नदी में मिले. सो मेरे को आई थॉट कि अरे हाउ ब्यूटीफुल आर दिस पिक्चर, ये कैसे हुआ रहेगा वगैरह वगैरह. बट ये जो लाइन्स है स्टोन्स के ऊपर, ये नाउ आवर सेशन इज नॉट इंटरेक्टिव. मतलब मैं बात कर सकता था बट अभी वी हैव वेरी हाई नंबर सो वी कांट डू दैट. सो बेसिकली दिस कोई बोलता है कि ये इस तरह के सेडिमेंट्री रॉक्स है, ये रॉक्स है, वो रॉक्स है. ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये क्या हो रहा है कि समर में एज द वाटर गेट्स इवोपरेट, तो ये जो सॉल्ट है वो सॉल्ट की लाइन्स है ये. तो जैसे इट शोज द वाटर लेवल, पहले यहाँ था वाटर लेवल, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, या तो ऊपर था, नीचे 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 गया. सो दिस इज समथिंग विच फॉर मी एज ए फोटोग्राफर मेरे को बहुत मजा आता है ये सब चीजें देखने को, या इसलिए भी ये फोटोग्राफ है यहाँ पर. और ये सिर्फ सॉल्ट नहीं है बेसिकली, वहाँ पे वॉशिंग, दे ऑल्सो पीपल वॉश देयर क्लोथ्स. तो बेसिकली वो वॉशिंग सोडा होगा जो यहाँ पे उसकी लाइंस दिख रही है. सो दिस इज अगेन वेरी स्मॉल स्टोरी, वन ऑफ द स्मॉल एनेक्डोट. तो ये इनका वीडियो भी है मेरे पास. इन्होंने मेरे को बताया की जसं जसं ते पाणी आटत जातं तसं तसं ते लाईनी बनत जातात. Then I have another story of Dahisar River where this is story of Anandi Bai. वो लॉकडाउन में मर गई, गुजर गई. She was very old, not because of coronavirus. Okay. And Anandi Bai was very old lady and she used to live alone. और उसका एक ही फ्रेंड था घर में, या एक ही रिलेटिव था उसका. And that relative was Termite Hill. जो यहाँ उसका बेड है लेफ्ट साइड में, ऊपर ये इधर बेड है, और ये टर्माइट हिल रेंजेस है. सो आई हैव अगेन मेरा एक और उनका इंटरव्यू भी लिया हो मैंने. तो दिस वाज वेरी शॉकिंग अगेन. सो मेनी लाइक देयर आर सो मेनी सरप्राइजेस. लाइक ये हम लोग को स्कूल में कभी बताया नहीं जाता. हम लोग को स्कूल में क्या बोलते हैं कि मतलब स्कूल में ये हमको चीजें होती ही नहीं है, पता ही नहीं चलता है कि ये सब चीजें नहीं है. तो बेसिकली हम लोग घर में एक कॉकरोच आ जाएगा या चींटी की लाइन लग जाएगी तो वी यूज इंसेक्टिसाइड, हम लोग स्प्रे मार के उनको भगाते हैं. लेकिन यहाँ पे आदिवासी तो साथ में रहते हैं. सो दे ऑलरेडी डूइंग द कोएग्जिस्ट, जो आज हम लोग ने डिस्कवर किया है, लिविंग सस्टेनेंस लिविंग, इको फ्रेंडली लिविंग, दे आर डूइंग फ्रॉम एजिस. उनने कभी उसका ब्रांडिंग नहीं किया, लेकिन हम लोग को अभी पता चल गया ये तो ये लोग पहले से ही कर रहे हैं. जो हम लोग को कभी मेरे स्कूल की टीचर ने नहीं बताया, जो कि मेरे स्कूल टीचर ने मेरे को बताना चाहिए था कि आदिवासी इको फ्रेंडली लोग हैं, ये हमको स्कूल में नहीं बताया गया है. So this is something after like getting this much old now we are getting to know अरे ऐसा है क्या. तो काफी. and this lady when उसका घर renovation हो रहा था तो they could have destroyed this termite, but ये मेरे को luckily ये photograph मैंने ही खींचा ये कि when they are renovating their house they kept that termite hill inside their house. So the like living with wild और coexistence, ये हम लोग सब बहुत एलिड बातें हैं हम लोग की. हम लोग बहुत पढ़ने लिखने के बाद हमको ये समझ में आता है, बहुत सारी बुक पढ़ने के बाद समझ में आता है. बट इन लोगों ने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो ये तो उनका नेचुरल वे है लिविंग का. सो दिस इज व्हाट आई मुंबई रिवर फोटो प्रोजेक्ट में मेरे को ये सब सीखने मिल रहा है. रादर देन टेलिंग एवरीबडी आई गॉट माई सेल्फ गेटिंग एजुकेटेड, वैसा हो रहा है. ओके, तो अभी हम लोग ये एक और एक स्टोरी थी, अभी हम लोग और एक स्टोरी में बताता हूँ. So there are like we also when we get educated, हम लोग जब पढ़े लिखे बन जाते हैं तो हम लोग को अक्ल आती है, और अक्ल आने के बाद हम लोग बहुत सारा हेल्प करने को जाते हैं. तो ऐसी एक हेल्प करने की स्टोरी है कि एक कहानी पढ़ता हूं मैं. एक सीडान आती है, व्हाइट कलर की सीडान आती है, और वो तुमनी पाड़ा करके एक जगह है नेशनल पार्क में, वहां आके रुकती है और बहुत हॉर्न मारते हुए आती है. ओके. और उस पाड़ा के जहाँ जितने भी बच्चे हैं जो स्कूल से आए हुए हैं, द चिल्ड्रन whoever they are, like wherever they are, they come rushing to in the direction of the car in whatever condition they are, और वो उस कार के पीछे लाइन में खड़े हो जाते हैं. they stand in the queue. और फिर वो व्हाइट कार में से व्हाइट कपड़ा पहना हुआ आदमी बाहर आता है और गाड़ी की डिक्की खोलकर वो पार्ले जी बिस्किट बांटने लग जाता है. तो आई हैव पिक्चर भी, एक फोटो भी है मेरे पास उसका, कि ये लकीली आई वाज देयर, मैं कुछ और काम करने के लिए आया था. सो सी द चिल्ड्रन 1 2 3 4 5 6 और एक 7 जो आप लोग को दिखता नहीं होगा. दे हैव कम फ्रॉम स्कूल एंड चेंजिंग देयर क्लोथ्स, और वही कंडीशन में उन लोग बाहर आ गए.
and they are standing in a queue in front of that white car, और वो आदमी उनको क्या दे रहा है? पार्ले जी दे रहा है. बहुत बड़ी बात कर रहा है वो, राइट? मतलब इस आदमी को दिखाना है कि वो बहुत बड़ा क्या कर्ण है, राइट? और क्या दे रहा है? पार्ले जी. तो ये इंसिडेंट्स ने मेरे को बहुत हिला दिया कि वेर जस्ट एक 5 रुपए का पार्ले जी के लिए उनको भिखारी बना दिया हम लोग ने. सी दे आर ऑलरेडी दे कैन लिव देयर ओन लाइफ, दे डोंट वांट अस, बट व्हाट वी हैव डन टू देम. अगर उसको इतना ही ये होता तो वो घर पे जाके प्यार से बिस्किट दे देता. दिस इज हाउ वी सी, लाइक दिस इज हाउ मुंबई पीपल सी आदिवासी. ये हमारा एंगल है आदिवासी को देखने का. सो दिस इज, ये मेरे को इस मोमेंट ने मेरे को हिला दिया. सो वी डोंट नो व्हाट टू गिव. हमने उनको पूछा ही नहीं कि आपको क्या चाहिए, हमको जो देने का हम लोग वो दे रहे हैं. सो दिस इज ऑल्सो वन मोर केस वेयर दिस गाय इज वेयरिंग सो मेनी फ्रेम्स, बिकॉज हम लोग लाके उनको पे थोप देते हैं, अरे मेरे पास ये सामान पड़ा है, मैं आदिवासी को जाके दे देता हूँ. लेकिन क्या हमने पूछा है कि उनको क्या चाहिए, या चाहिए कि नहीं चाहिए, कि अपने पास जो है वो दे देने का? सो दिस इज हाउ, this is what I discovered when I started going there, talking to them. Okay. So this was another story. This is how we see ourselves. हम लोग अपने आप को बहुत पढ़े लिखे समझते हैं और हम लोग इस तरह से हमारे डोनेशन करने जाते हैं. रियली लाइक मेरे को बहुत अजीब लगता है कि जब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग हमारा बर्थडे मनाने के लिए ऑर्फनेज में जा रहे हैं. दिस समथिंग आई डोंट अंडरस्टैंड दैट. एक दिन की चांदनी करने जा रहे हैं हम लोग. सो दिस इज, और हम लोग अपना वो पोस्ट पे भी डालते हैं, फेसबुक पोस्ट या जो भी है, कि दिस इज व्हाट आई एम डूइंग इट. अरे I don't understand that basically. Yeah. So now another story is about the subways. There are a lot of subways in Bombay. There is a Milan subway hai. Then we have Poisar subway hai, Malar subway, Andheri subway. So again, this is again I found why they get flooded every time. Now, तो कुछ फोटोज में दिखाता हूँ आपको. ये अंधेरी सबवे, इट गेट्स फ्लडेड. ये आई थिंक मलाड सबवे, ये भी फ्लड होता है बारिश में. तो ऐसे बहुत सारे फ्लड सबवेज है. सो आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग व्हाई दे गेट फ्लडेड. तो एक मैप दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को. दिस इज अंधेरी सबवे, जो अंधेरी स्टेशन के टुवर्ड्स हैसर, टुवर्ड विरार साइड में है. ये अंधेरी स्टेशन इधर है, तो देयर इज अंधेरी सबवे इधर. ओके. नाउ ये अंधेरी सबवे के बाजू में से ही मोगरा पाड़ा है इधर, और वहां से एक मोगरा नदी बह रही है. तो हम लोग ने क्या कर दिया, उस नदी को का एरिया में ही रोड बना दिया. और नेचुरली जब बारिश ज्यादा आएगी तो नदी का खुद का एक विड्थ होता है. जब कम पानी रहेगा तो कम विड्थ रहेगा, जब ज्यादा पानी रहेगा तो ज्यादा विड्थ रहेगा नदी का. लेकिन हमने उसको नॉन मानसून के हिसाब से रोड बना देते हैं हम लोग. जब मानसून आएगा तो उसका ओरिजिनल विड्थ पे ये रिवर आ जाती है और वो फ्लडेड हो जाता है. और हम लोग ब्लेम करते हैं कि अरे म्युनिसिपैलिटी ने कचरा साफ नहीं किया, ना ये किया, नहीं वो किया. नहीं, एक्चुअली हमने उधर रोड बना दिया है. दैट्स व्हाई आई सेड टू यू कि हम लोग वो एक ये था, वो स्टार्ट में मैंने आपको एक बताया था कि अगेन आई विल कम टू दैट in the beginning there was a river, the river became a road, है ना, and the road branch out to the whole world. And because the road was hungry, once a river, it was always a hungry. तो ये now I understood कि why this is true, is it, कि हम लोग ने नदी को ही रोड बना दिया. I'll show you some more picture where the rivers are getting like why my area, like you say कि अरे मेरा एरिया फ्लड हो गया, क्योंकि हम लोग ने वहीं पे अपनी बस्ती बना दी है, वहीं पे अपना घर बना दिया है. या सो ये रिवर मोगरा है. रिवर मोगरा तो पता भी नहीं है एक्चुअली, ये मेरे को मैप करना पड़ा, वो गूगल मैप में दिखती भी नहीं है. सो आई एक्चुअली वॉक्ड होल लेंथ ऑफ द रिवर एंड फाउंड द सोर्स ऑफ द वेयर इट इज फ्लोइंग. ये मैंने यहाँ तक खाली अवेलेबल है वो रिवर, इसके आगे तो आगे पता ही नहीं हो मोगरा रिवर, और मोगरा रिवर का नाम ही नहीं है गूगल मैप में. सो आई फाउंड दैट रिवर. देन देयर इज अ मलाड सबवे के बाजू से मलाड रिवर जा रही है. Then you have पोइसर सबवे के बाजू में पोइसर रिवर है. ओके. एंड दिस इज इनसाइड नेशनल पार्क, दहीसर रिवर. ये एक्चुअली रोड है जो नेशनल पार्क के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के लिए जाता है. बट मानसून में देखो क्या हो रहा है,
बिकॉज रिवर का ये टोटल लेंथ रिवर का ही है, बट हम लोग ने वहां पे रोड बना दिया है। तो बहुत सारे जगह पे ना फ्लड हो रही है, इसलिए हो रही है कि हम लोग ने वहां पे रिवर को एनक्रोच कर दिया है। सो दिस आर द पिक्चर्स एक्चुअली, SGNP रोड एंड दहीसर रिवर, बट एक हो गए वो। तो ये उसकी जगह है, वो रिवर का स्पेस है ये। ओके, सो बेसिकली एक ब्लू लाइन होती है, एक रेड लाइन होती है जो रिवर के बाउंड्री को निर्धारित करती है। वो हम लोग को बॉम्बे रीजन में हम लोग को पता ही नहीं है कि रिवर को लाइन भी होती है, ब्लू लाइन भी होती है, रेड लाइन भी होती है। ओके, सो दिस आर द डेफिनेशंस ऑफ द रिवर। या तो ये उस टाइम के फोटोज है जब रिवर की वजह से जो डिस्ट्रक्शन हुआ था। एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्लडिंग्स, लाइक पीपल लिविंग अलोंग द रिवर वारली, उनके घरों में भी पानी आ गया था और कुछ घर भी चले गए थे। तो वही एक स्कूल की बुक्स खराब हो गए थे, तो आई शॉट दैट पिक्चर वेयर ड्राइंग बुक काफी गीले हो गए थे। तो उसमें मेरे को एक शॉट मिल गया कि वी हैव बीन टॉट इन स्कूल, हम लोग को पहली एक ड्राइंग हमने जिंदगी में अगर बनाई रहेगी तो हम लोग पहाड़ बनाते हैं, घर बनाते हैं, एक पेड़ बनाते हैं, उस पहाड़ में से एक नदी निकलती है और एक सूरज बनाते हैं। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ ड्राइंग जो हम लोग ने सीखा है। एंड दिस रिवर इज सो ब्यूटीफुल रिवर, उसको कोई उस पर ना डैम रहता है ना कुछ रहता है, ऐसा कभी होता है क्या? बट ये बहुत कितनी गलत ड्राइंग है ये आजकल के टाइम की। मतलब दिस इज वेरी, ये कितना झूठ बोलते हैं हम लोग अपने आप से, बट दिस इज व्हाट वी डू। हम लोग ऐसे बनाते हैं, हम लोग को मतलब हम लोग का एजुकेशन या हम लोग का पहले अच्छा था, वो जो भी था जो हम लोग का, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। सो ये जो फोटोज हैं यहाँ पर यू कैन सी द because of the flooding of the river, the house was collapsed. And like with the Facebook, I so crowdsource करके we bought some books and हम लोग ने इस गांव में उनके बुक्स दिए थे, तब इसलिए मैं वहां गया था। Okay, so coming on the like all these rivers in Bombay are now walled from all the sides. तो वो क्या हो रहा है, ये पोइसर रिवर की है, तो हम लोग वो वॉल बना रहे हैं ताकि हम लोग रिवर को देखे नहीं और हम लोग बेझिझक उसमें कचरा डाले। दिस इज अगेन इन माय एरिया, ठाकुर विलेज, जो इतनी बड़ी नदी का इतना सा छोटा गटर बन गया है। एंड हम लोग को बोलने को कोई झिझक भी नहीं लगती क्योंकि वो गटर हो गई है, नाला, हम लोग बोलते हैं नाला है, वो थोड़ी का नदी है, नाला है वो। एंड दिस इज पोइसर रिवर, सडनली लाइक व्हेन इट गोज थ्रू माय एरिया इट गोज अंडरग्राउंड, इसके बाद वो अंडरग्राउंड चली जाती है। ओके, तो ये एक फोटो है जहां पर वो रिवर, पोइसर रिवर है, इसके नीचे से जा रही है। तो मैंने उस पर एक थोड़ी सी वारली आर्ट बना दिया था उसके ढक्कन के ऊपर। दिस अगेन वन पिक्चर, वन ऑफ द पिक्चर्स ऑफ पोइसर रिवर। यहाँ पे रिवर दिख ही नहीं रही, इट इज गोइंग अंडरग्राउंड हो गई है ये। और ये रिवर कभी, ये रेड जो दिख रहा है आप लोग को, दैट इज वेरी स्ट्रेट, रिवर इतनी स्ट्रेट कभी होती नहीं है, बट बिकॉज इज गोइंग थ्रू लाइक वेरी मॉडर्न कॉलोनी, उसको हम लोग ने सीधा कर दिया है और फिर वो आगे जाके टर्न वगैरह हो रही है, बट यहाँ पे वो सीधी है और अंडरग्राउंड है। एंड यू कैन सी दिस रिवर ऑन गूगल मैप। फिर और एक छोटी स्टोरी है, हसन द डाइवर। ये मीठी नदी में लोग दे डाइव इन मीठी रिवर, और उस मीठी रिवर के गंदे पानी में दे कलेक्ट रिलीजियस गॉड्स, स्टैचूज ऑफ गॉड, कॉइन्स एंड एवरीथिंग। ओके, और वो 1-2 घंटे के डाइव में दे अर्न 300-400 रुपीज, व्हाट ही सेड टू मी। और ये पानी को आपको टच करने को भी मन नहीं करेगा, ये बांद्रा की खाड़ी है। व्हेन यू सी फ्रॉम द ब्रिज जो 7 आइलैंड्स को कनेक्ट करता है ना, माहिम और बांद्रा वाला, वो ब्रिज के ऊपर से मैंने फोटो खींचा है। ओके, इसमें आपको सारे ही भगवान मिल जाएंगे, इसमें कुरान के पत्ते मिल जाएंगे, पन्ने मिल जाएंगे, आपको गणपति का स्टैचू मिल जाएगा, सब चीज मिलेंगे। क्योंकि हम लोगों को लगता है जब हम लोग कचरा फेंकते हैं नदी में तो हम लोग बोलते हैं उसको नदी, और हमारा सारा जो रिलीजियस अनवांटेड चीज है हम लोग वो नदी में डालते हैं, और हम लोग जब उसको नाला नहीं बोलते तब हम लोग उसको नदी बोलते हैं, और जब कचरा फेंकने का तो फिर कचरा भी फेंकते हैं। तो हम लोग इतने डबल स्टैंडर्ड हो गए हैं। सो नाउ कमिंग टू ये लाइक इनका वीडियो दिखाया मैंने, ही इज दिनेश। तो दैट वाज दिनेश हु इज द लास्ट वारली आर्टिस्ट इन नेशनल पार्क, एंड ही मेक्स ब्यूटीफुल आर्ट एंड पेंट, और वो एज एन आर्टिस्ट अपना लाइफ का गुजारा कर रहा है।
So let me see if I can play those video again. वो तब चले नहीं थे. तो let us see that. मेरे को शायद refresh पता नहीं क्यों नहीं चल रहा था तब. Refresh. I'll play another video. माझं नाव दिनेश सुरेश बरप आणि मी वारली आर्टिस्ट आहे आणि माझ्या आजीने मला हे वारली आर्ट शिकवलं आहे. आणि वारली आर्ट म्हणजे पूर्वी जे वारली आदिवासी समाजातील लोक होते ते त्यांच्या दैनंदिन जीवनातील घडामोडींचं चित्रण तांदळाच्या पिठाने मातीवर मातीचा वापर करून भिंतीवर केले जायचे. म्हणजे त्यांच्या जीवनात काय गोष्टी होतात. फॉर एक्झाम्पल लग्न समारंभ, काही सण असतील. सूर्याला आपण पिता मानू, चंद्राला आपण माता मानू. आणि आई कंसरी आहे, नारायण देव आहे, चेड्या आहे, वाघोबा आहे, हिमाई आहे, हिरवा देव आपले जंगलाचा हिरवा देव, गावदेवी, अग्निवेत्ता जो चुलीजवळ आपले रह आणि ह्या देवाच्या हातातली काठी आणि आजी आजोबा त्यांना सगळ्या गोष्टी माहीत होत्या ना, त्यांनी आपल्याला सांगितल्या त्यासाठी. आणि चंद्र म्हणजे माता. वारली समाजासाठी मंचच नाही आहे आणि वारली समाजाचा काही परंपरा आहे, संस्कृती आहे, भाषा आहे, ह्याच्याबद्दल बाहेरच्या लोकांना काहीच माहिती नाही आहे. जर गव्हर्नमेंटने म्युझियम फक्त वारली समाजासाठी म्युझियम तयार केलं तर एक वारली समाजाची ओळख होणार. मी ही वारली चित्रकला आहे ती माझ्या वडिलांकडून शिकलेली आहे. ते हळूहळू ही वारली चित्रकला काढत होते आणि त्यातच मला पण आनंद भेटायला लागला की ती मीही काढू शकते. त्याचबरोबर ही कला मी पुढे नेण्याचाही प्रयत्न केला आणि मी ती काढत राहिले. त्यानंतर मी एकटीच काढणार तर मग ती कमी काढू शकते. त्यामुळे मी ठरवलं की इकडची जी मुलं आहेत त्यांच्या बरोबरीने मी सुद्धा त्यांना ट्रेनिंग देत मी पेंटिंग चित्रकला जी आहे ते मी काढत राहील. मी संजय गांधी नॅशनल पार्कमध्ये वारली आर्ट एकलाच राहिला हो. आणि याचं कारण असं आहे काय, वारली पेंटिंगमध्ये जास्त पैसा नाही हा असं लोकांना वाटतं. तर लोक इथेची काम करायला बाहेर जात. तर हेच कारणामुळे आपला वारली आर्ट आहे त्या संपत आला आहे इथं असं मला वाटतं. I'll show you that was the first movie was last part was remaining, so I'll just play in the same player. मुंबई हे एक सुंदर बेट आहे आणि मुंबईमध्ये मधोमध आणि त्या जंगलाचं संरक्षण करण्यासाठी मला इथून बाहेर शिफ्ट करणार आहात. तर हे why it's not playing? Anyway, there's a problem with that video, I suppose. I'll run another video where the Koli is on the Koli people.
माझं नाव केतकी भडगावकर आणि मी आर्किटेक्ट आणि अर्बन डिझायनर आहे. तर 8 वर्षापूर्वी मी आणि माझे मिस्टर आम्ही एक ऑर्गनायझेशन सुरू केलं, त्याचं नाव आहे बॉम्बे 61. तर बॉम्बे 61 हे नावच आलं मुळात की हा पिनकोड आहे ह्या जागेचा, वर्सोवा कोळीवाड्याचा, आणि इकडचं आपलं मूळ आहे, इकडनं आपली सुरुवात झाली म्हणून आम्ही याचं नाव बॉम्बे 61 ठेवलं. जो आपल्याला कचरा वर्सोवा कोळीवाड्याच्या इथे दिसतो किंवा ज्या बीचवरती जो दिसतो तो एक्झॅक्टली येतो कुठून हे आम्हाला तेव्हा लक्षात आलं की ही जी खाडी आहे ही एवढी मोठी आहे, जवळजवळ त्याचा कॅचमेंट आपण बघायला तर 300 हेक्टरच्याही वर आहे. इकडनं ज्या कुठल्या नद्या किंवा नाले जे वाहत येतात ते येताना सगळा कचरा घेऊन या खाडीमध्ये येतात. भरतीला ऑब्व्हियसली पाणी आत येतं आणि ओहोटीला ते सगळं बाहेर खेचतं. तर जेव्हा ते पाणी बाहेर खेचतं समुद्राकडे तेव्हा कचरा पण सगळा ते खेचून घेतं आणि ते कचरा खेचून घेतं तेव्हा हे मँग्रोव्हमध्ये जाऊन सगळा तो अडकतो आणि वर्षानुवर्ष तिथेच तो अडकून राहतो. हे आउटलेट आहे सुएज आणि तुम्हाला पाण्याचा कलर सुद्धा चेंज होताना दिसत. हे जे पूर्ण प्लास्टिक आपल्याला जे अडकलेलं दिसतं आहे मॅनग्रोव्हजमध्ये ते ॲक्च्युली ब्रीडिंग ग्राउंड्स आहेत फिशेसचे. आणि त्याच्यामुळे काय होतं की आता जेव्हा सूर्यप्रकाश याच्यावरती पडतो किंवा काही जे काय त्याचं डिसइंटिग्रेट होतात हे प्लास्टिकचे पीसेस, त्याचे मायक्रोप्लास्टिक्स होतात आणि मायक्रोप्लास्टिक्स होऊन तिथे पाण्यामध्ये मिसळतात. तर त्या लेवलचं पोल्युशन तर आपल्याला दिसतसुद्धा नाही. हे पोल्युशन आपल्याला दिसून तरी येतं, पण जे ब्रीडिंग होतं त्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला मायक्रोप्लास्टिकचे त्याच्यामध्ये काहीतरी पार्टिकल्स दिसणार. गव्हर्मेंट खूप प्रकारे ॲक्च्युली आपली मदत करू शकते आणि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज की टू डॉक्युमेंट. म्हणजे हे जे आपल्याकडे जे पूर्ण ही खाडी आहे, समजा ही पूर्ण एक नॅचरल रिसोर्स आहे जी खूप महत्त्वाची आहे आपल्या सिटीसाठी आणि त्याचं जर आपण एक एक्सटेन्सिव्ह डॉक्युमेंटेशन केलं की किती विड्स आहेत, कुठल्या प्रकारचे आपल्याकडे मॅनग्रोव्ज आहेत, कुठल्या स्पीशीजचे आपल्याकडे प्रजाती आहे, म्हणजे आपली बर्ड्स कुठले आहेत किंवा फिशेस कुठले आहेत. आता हे जे काय खाडीची परिस्थिती आहे इथे तर कोणी फिशिंग करूच शकत नाही आणि त्यामुळे ना ते म्हणजे त्यांना असं झालं की त्यांच्याकडे इलाज नाही आहे दुसरा, पण त्यांना डीप सी फिशिंगच करावं लागतं. पण आता डीप सी फिशिंग करायचं म्हणजे ते पण परवडण्यासारखं नाही राहिलं आहे आज, कारण डिझेलचे भाव वाढलेले आहेत, त्यांना लेबर पाठवायला लागतं. जवळजवळ 10 जणं जातात एका बोटीवरती, त्यांना 10-15 दिवस जायला लागतं, त्यामुळे त्यांचा खायचा बंदोबस्त सगळं आणि त्याच्यातसुद्धा मच्छी त्यांना किती मिळेल हे सुद्धा अनिश्चितच आहे सगळं. त्यामुळे त्याच्या मागे प्रॉफिट असं काही उरलेलं नाही आहे फारसं. त्यामुळे आता कुठल्याही फॅमिलीला असं वाटत नाही की त्यांच्या मुलांनी आता या धंद्यात राहावं, कारण त्यांना ह्याचा कन्फर्म इन्कम नाही आहे ह्याच्यामधून. त्यामुळे बरेचसे यंग मुलं असे आहेत की जे आता MBA करतात, डॉक्टरी करतात, इंजिनियर करतात, त्यामुळे त्यांना कुणालाच फिशिंग कंटिन्यू करायचं नाही. So basically this video talks about the rivers, the freshwater water bodies which are coming with and empties into the Malad Creek with lot of pollution, and because of this pollution the traditional fishing has been fading away as a culture of the coolies. So I'll also show you one more video where it's about again for fishermen and about the fishes. So let's see that video also. माझं नाव गणेश नाकवा, मी करंजाचा एक मच्छीमार आहे. करंजा कोऑपरेटिव्ह संस्था मच्छीमार संस्था जी महाराष्ट्राची सर्वात मोठी संस्था आहे, ज्याच्यामध्ये 600 बोटी आहेत, हजारो मच्छीमार रजिस्टर आहेत, त्याचा मी संचालक आहे. 2011मध्ये मी इंग्लंडवरून वापस आलो, तिथे मी माझा अभ्यास केलेला ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करून. तर 2011 ते आता 2020 जवळपास 10 वर्ष मी मच्छीमारी जी अनऑर्गनाइज सेक्टर आहे महाराष्ट्रातच नव्हे तर ऑल इंडियामध्ये ती ऑर्गनाईज करण्यासाठी मी गेल्या 10 वर्षापासून काम करत आहे आणि मच्छीमार संघटनेमध्ये काम करत आहे. मुंबईचा फिश सीझन हा ऑब्व्हियसली मनसून जेव्हा कमी होतो, म्हणजे ऑगस्ट महिन्यापासून किंवा नारळी पौर्णिमा कोकोनट डे म्हणतो तेव्हापासून स्टार्ट होतो. तर ऑगस्टला जास्त करून पॉम्फ्रेट मिळतं, सप्टेंबरला सुरमई मिळतं, ऑक्टोबरला तुम्हाला हलवा मिळेल, नोव्हेंबर डिसेंबर तुम्हाला बांगडा मिळेल, जानेवारी कॅटफिश, फेब्रुवारी रावस, घोल, मार्चला परत कॅटफिश सीझन असतं, परत दाडा, रोल, रावस, बोंबील मार्चमध्ये असतं. एप्रिल मे जरा सीझन स्लॅक असतं, त्याच्यामध्ये छोटे मासे खाल्ले पाहिजे बिकॉज मोस्ट ऑफ द फिश ब्रीडिंग करतात, म्हणजे मांदेली, छोटे प्रॉन्स, जवला वगैरे खायला पाहिजे. परत मन्सून झाले जून जुलै की प्रॉन्स खाल्ले पाहिजे. मुंबईच्या किनारी भरपूर प्रॉन्स मिळतात आणि बोंबील पण मिळतं. मग चैती, टायनी ही कोलंबी जून जुलैमध्ये खाली पाहिजे. तर हा एक मुंबईचा बेसिक सीझन आहे. आपल्याकडे 7-8 टाईपचा टूना आहे. एक लॉंग टेल म्हणतात, एक बिग आय म्हणतात, एक कावा कावा म्हणतात, एक लिटिल ट्युनीज म्हणतात. हे सगळे लोकल मासे आहेत
तर स्नॅपर असो किंवा टुना असो, जेव्हा आपल्या मार्केटमध्ये एवढे लोकल मासे उपलब्ध असून सुद्धा आपण इंटरनॅशनल मार्केटचे मासे प्रिफर करतो रेस्टॉरंट्समध्ये, तर हे मासे आपण आणण्यासाठी नवीन कन्झ्युमर डिमांड वाढवलं पाहिजे. हे मासे आपल्याकडे मिळतात पण तुमच्या प्लेट्सवर येत नाही. त्याचं मेन कारण आहे की लोकांना याचा अवेअरनेस नाही आहे आणि लोकांकडून तो डिमांड येत नाही आहे. जोपर्यंत तो डिमांड येत नाही तोपर्यंत मच्छीमार हा मासा कधी आपल्या बाजारात विकायला आणणारच नाही. मग ह्या माशाचा काय होतं, तर हा मासा ऑब्व्हियसली इथेच डिमांड नसल्यामुळे तो चिपली एक्सपोर्ट होतो बाकीच्या युरोपियन मार्केट्समध्ये, US मार्केट्समध्ये, साऊथ एशियन कंट्रीजमध्ये. जिथे त्याला चांगला डिमांड आहे तो तिथं जातो. पण मिडलमॅन आणि या एक्सपोर्टर्स लॉबीमुळे जो राईट मूल्य त्याला मिळाला पाहिजे, जो तिकडच्या इंटरनॅशनल प्राईसमध्ये कधी $20 असतो, कधी $30 असतो, तिथं तो खूप स्वस्तात घेतला जातो. $3 ते $4 तिथं आम्हाला विकायला लागतो, बिकॉज डोमेस्टिक मार्केटमध्ये तो डिमांड नाही. पण तुम्ही जर त्याचे कंडिशन्स बघितले की टिलापिया, बासा किंवा वेनामी जसा ग्रो केला जातो, त्यांचे पॉन्ड कंडिशन्स बघा, तिथला जो वॉटर आहे त्याचे कंडिशन्स बघा, तर ते खूप हार्मिंग आहे आणि अनएक्सेप्टेबल आहे. आणि अशा अनफेवरेबल कंडिशन्समध्ये मासा उगवला जातो, स्पेशली व्हिएटनाम, इंडोनेशिया आणि चायनीज कंट्रीमध्ये. तो तिकडचा मासा आपल्याकडे इम्पोर्ट होतो आणि आपला चांगला मासा तिथे एक्सपोर्ट होतो. तर हाच मेन रिझन आहे की इन स्पाईट ऑफ इंडिया 38 लाख टन्स फिश पकडतो, पण ॲक्च्युअली डोमेस्टिक कन्झम्पशन आहे किती याचा अभ्यास कोणच करत नाही आहे. म्हणून लास्ट 10 years ॲक्च्युली इंडियामध्ये किती मासा आला आणि आपण किती एक्सपोर्ट केला हा सर्व अभ्यास केला पाहिजे आणि त्याची स्ट्रॅटेजी बनवली पाहिजे की परत लोकल फिशेस लोकल रेस्टॉरंट्समध्ये कसे एंट्री करतील. And there is one final video that's again, all these are very short films, 3 minutes films. This is final video. Actually, VLC player is not running. I'll play in media player. माझं नाव विकास मोतीराम कोळी. मी वर्सोवा कोळीवाड्यात राहतो. मी कोळी समाजातून आहे. मी गेल्या 17 वर्षापासून ॲडव्हर्टायझिंग, ब्रँडिंग आणि व्हिज्युअल मर्चंडायझिंग रिटेलच्या क्षेत्रात काम करतो. काम करता करता असं वाटलं की आपण आपल्या भूमिपुत्रांसाठी, म्हणजे आम्ही जे मुंबईचे मूळ रहिवासी आहोत कोळी, त्यासाठी काहीतरी करावं. आणि गेल्या 2-3 वर्षापासून मी समाजाबरोबर काम करतोय. महाराष्ट्रात कोऑपरेटिव्ह जर आपण पाहिलं एक्झाम्पल, तर मला असं वाटतं की आता महाराष्ट्रात ऊस कारखाने किंवा साखर कारखान्याचं दिलं जातं, पण सगळ्यात पहिला जे कोऑपरेटिव्ह बनलेले आहे ते फिशिंगचं बनलेलं आहे. आणि फिशिंग या क्षेत्रातून महाराष्ट्र हा एकेकाळी नंबर 1 होता. आज तुम्ही जर परकीय चलन म्हणजे बाहेरचा जो रेव्हेन्यू जनरेट होतोय तो IT सेक्टर नंतर पूर्ण भारताला मच्छीमार म्हणजे फिशिंग मधून मिळतो. पण महाराष्ट्र हा एकेकाळी जो 1 नंबरवर होता तो घसरत घसरत 3 वर आला. आज आपण किती नंबरवर आहोत? आज आपण 7 नंबरवर आहोत, 7व्या स्थानावर आलोय. याचे वेगवेगळे रिझन आहेत. म्हणजे त्याचं एखादं रिझन कोस्टल रोड सुद्धा असू शकतं. मरीन फिशरीजवर गव्हर्नमेंटचं किती लक्ष आहे? मला असं वाटतं की 25%. 75% लक्ष कुठे आहे? इनलँड फिशिंगवर. इनलँड फिशिंग कोण करू शकतं? ज्याच्याकडे जमीन आहे. कोळी समाजाकडे जमीन आहे का? नाही. मग जर आमच्याकडे जमीन नाही तर आम्ही ते इनलँड फिशिंग करणार कशी? हेच एक्झाम्पल गुजरातला. गुजरातमध्ये जर तुम्ही बघितलं, वलसाड, सुरत या भागामध्ये तिकडच्या फिशरमॅनना लँड्स वाटप केलेले आहेत. ज्या खारफुटीच्या जमिनी किंवा खाजणं आहेत ते फिशरमॅनना वाटप झालेले आहेत. आता त्याच्यावर ते पॉन्ड्स किंवा हे फिशिंग करता येऊ शकतं. महाराष्ट्रामध्ये रेव्हेन्यूने, महसूल विभागाने अजून या बाबतीत काहीच धोरण डिक्लेअर केलेलं नाही. आज तुम्ही मुंबईत बघत असाल किंवा कोणत्याही महानगरामध्ये आज डेव्हलपमेंट काय झाले की तुम्हाला क्वालिटी वॉल्सच्या गाड्या आहेत, मोमोजच्या गाड्या आहेत, भाज्यांच्या गाड्या आहेत, पण फिशची गाडी भेटत नाही. जेव्हा की फिश ऑन व्हील नावाची गव्हर्नमेंटची ऑफिशियल स्कीम आहे, तर ही स्कीम किती लोकांपर्यंत गेलेली आहे? लोकांना मिळालेलीच नाहीये. आज महिला जेव्हा बाहेर मच्छी विकायला बसते तेव्हा तिला सर्रास उठवलं जातं. पण हे जर उठवलं जात असेल आणि ते जर लिगली करेक्ट असू शकतं, पण ते जर ही स्कीम त्या महिलेला किंवा तिकडच्या एखाद्या गावातल्या ग्रुपला जर देण्यात आले अशा फिश ऑन व्हील, तर मला वाटतं की युवकांना एक रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो. Yeah. So these were the all movies I made in like my project. So we'll continue with my remaining presentation. So we already saw Dinesh, who is doing a lot of good work in Wali Art, and
He basically do painting on sarees, kurtas, t-shirt and all. And he also make colors from the natural colors, like from the flowers, from the stones, and use them as for the painting. So he's also takes workshop and tell people about his life and Warli way of living. He has his own. Every Warli household has their own garden where they grow their own vegetables. So in national park now they're not supposed to do farming and rear the goats and all. Now they work as a part-time guards and like that. And gradually like urbanization has made them slave basically. So this is also one of my important topic of my project. So I already shown you Dinesh interview. So this is how national park is, and this is actually now the Warli people are now only in this area. Sanjay Gandhi National Park is very big. This is your Thana Creek, and this is RA Colony, which now Google doesn't show as green in map. RA is like urbanized area. They show it, though it is green. So whatever the Warli peoples are left are there only in this area. Okay. So again, the person who was singing in the two of the videos, his name is Prakash Goyal. He's also a Warli activist, and he's fighting for RA. He fought for RA, and because of these people, the RA was saved. So I've been doing a lot of exhibitions of my pictures, not in the galleries. I've done some 26, 27 exhibition. This was a poster I made for my opening of the exhibition. It was inaugurated by Sudhara Kolve sir, and this was in 2000, long back, 2017. So this is how I exhibited my work on the road. This is a very interesting story. I'll tell you the story where this baker, Pawala, he came with the cycle and he saw the exhibition and he was so surprised. He asked me, where are these pictures from? So I told, this is same river where you are standing. बोलता ये थोड़ी का नदी है, ये तो नाला है, ये तो जो आपने फोटो खींचा है वो नदी है. बोलता मैं 17 साल से ये नदी को क्रॉस कर रहा हूँ लेकिन मेरे को पता ही नहीं कि ये नदी है करके. I said from here if you go 3 kilometers you will see this kind of this river. So this was an interaction I used to get from the people when they come and see my exhibition. So, and this was exhibition, anybody can come. When you put in gallery, like my friends will come and see the pictures, but यहाँ पे open gallery था, कोई भी आओ कोई भी देख सकता था. So I wanted to do a lot of this exhibition. So अभी this was my first exhibition. Maybe next time also I'll do more on media, like और बॉम्बे में जाके कहीं और नदियों पे भी exhibition करूँगा मैं. Yeah. So these are few pictures. I've done exhibition in schools and colleges, in the river also. This is the Dahisar River. So now from Mumbai River photo project, I now actually evolved to Hallu Hallu. Hallu Hallu is a project where I started taking people to see what I have seen. Like my friend Gopal, with him, Gopal is Mumbai paused on Instagram, very popular, and he has done great job of documenting Bombay. Few days back, he was live on Jashne Mumbai. So with him, we have started a project called Hallu Hallu, where we want, see, basically, we are now looking, this program is going on internet or live online. But thing is that just by sitting in library or attending on something on YouTube doesn't make वो मजा नहीं आएगा जब तक हम लोग एक्चुअली जाके उस जगह को देखेंगे. बिकॉज इन हल्लू हल्लू वी डोंट वांट टू डू अ वॉक, हेरिटेज काइंड ऑफ वॉक वेयर वी आर टॉकिंग, गिविंग लॉट ऑफ ज्ञान. यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि वी टेक टू देम टू द, आई विल जस्ट शो यू सम पिक्चर्स. This is a group, this is Dinesh house where I've taken some 25 people are there. And when they themselves go and interact and see, मुझे कोई बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती है. So that way they, वो जो समझना है उनको वो समझ जाते हैं. So this was art workshop, Warli art workshop.
दिनेश in the center. So directly interaction होता है. ऐसे हल्लो हल्लो में हम लोग बहुत सारे कोलीवाड़ा वॉक ले रहे हैं. कोलीवाड़ा में हम लोग बुक भी लॉन्च कर रहे हैं. दिस इज माय फ्रेंड, शी लॉन्च हर ओन बुक, कृपा ने लॉन्च किया था. फिर हम लोग स्लम्स में जाके भी वॉक कर रहे हैं. तो सी डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा तो ज्यादा समझ में आता है. मे बी मुझे ऐसा लगता है, जो वॉक में हम लोग देखते हैं तो ज्यादा समझ में आता है. ओके, तो ऐसे काफी सारे वॉक्स कर रहे हैं हम लोग. आई जस्ट मिस वन पिक्चर, आई टेल अबाउट दैट ऑल्सो. वर्ली कोलीवाड़ा में आई विद द हेल्प ऑफ Gangadhar sir and Rachna college student, we painted this wall, and वो wall ऐसी दिखती है. So this is your Bandra Valley ceiling, और ये भी Bandra Valley ceiling को cross करके. Then these are Koli people. हम लोग ने उस पे people we stick plastics wrappers and all, and मीठी river इधर से आ रही है. Just एक mural so that we get more, थोड़ा हम लोग को we highlight Koli people and Warli people. तो वैसा था ये. तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. दिस वाज माय प्रेजेंटेशन ऑन द, जो भी छोटा मोटा, मैंने बहुत ज्यादा काम नहीं किया अभी. आई विल से आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग ऑन मुंबई रिवर फोटो प्रोजेक्ट. ये काफी लंबा चलते रहेगा, शायद जिंदगी भर चलते रहेगा. आई हैव जस्ट टच, थोड़ा सा मैंने काम किया है, उसका मैंने प्रेजेंटेशन किया है ये. तो या, सो दैट्स इट. जोहार, एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग? I'm Aslam, I'll just say thank you first. And we'll take some questions, but thank you so much. I was thinking that if there is one word to sort of capture this, what you took us through, what would it be? And I think that one word to me would be humbling. I don't think this was a walk by the river. It was a story of people who we need to learn from, you know, whether it's the Kolis, the Adivasis, the Walis. Like you said, the idea of coexistence truly belongs to them. And I don't think it's our duty, but it is our good fortune to know them and learn from them, you know. And I think you have given us a peek into that. So it was just wonderful. And I think your films were so powerful because of just their simplicity and honesty. It was very, very enjoyable. Thank you so much. I felt like I have seen so much and it was eye-opening. And like I said, it was humbling. So thank you. There are some questions, so if you're up for it, we'll just quickly go through them. Yeah, sure. There is one question from Ankur who says, looking at Aarti's home, I realized that everyone now makes tin huts instead of mud huts. The mud hut keeps an interior quite cool, whereas the tin hut is very hot. Have they lost this art of making mud huts and the science of mud huts? No, basically, we all want Adivasi to live like Adivasi. This is something very, I found very, why we don't make mud house? I'll ask him. Why don't we we grow vegetables? I'll ask him again. And so why Adivasi only should do it? Why don't we do it? That's another way of looking at. But the problem with the mud house is they don't have cow dung to उसको जो लेप लगाते हैं वो नहीं है उनके पास, because they are not allowed to keep goats and cow over there. तो वो possible नहीं है. And even they are not full-timer Adivasi, they have become urbanized, they have to go to their offices. तो उसका maintenance कौन करेगा? हम लोग तो जाके नहीं करेंगे ना. तो there are so many issues with that. And पतरा लगा दिया तो फिर खत्म ना, फिर उसको maintain करने की जरूरत नहीं है. So पहले तो हम लोग ने उनकी जगह पे कब्जा कर लिया है, हम लोग ने नेशनल पार्क बना दिया है, और फिर हम लोग चाहते हैं कि वो आदिवासी जैसे भी रहे, तो वो पॉसिबल नहीं है ना. तो देयर आर सो मेनी वेज टू आंसर दिस. आई होप मैंने उसके एक दो स्टाइल से जिसको जवाब दे दिया है. नेक्स्ट. There's also a question from Shuchi who says, Aslam, I wonder if you have spoken to river conservationists. There might be mutual benefit of your project and to river conservation projects as well. If you know somebody who should I should talk to them, I'm ready to do it. But I'm connected with so many river people, like Siddharth Agarwal is there, who is working on Ganga, and there are people who we know, many, like we know each other. So ऐसा है. तो basically I don't see as a conservationist and like that. मैं अपने आप को समझता ही नहीं हूँ, एक्टिविस्ट भी नहीं समझता हूँ, कुछ भी नहीं समझता हूँ मैं. I'm just a photographer. I'm telling stories, right? तो मैं झंडा लेके नहीं जा रहा हूँ मैं कहीं पर.
मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि ऐसा है, बस मैंने खुद को डिस्कवर किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग ने ही, ये सबका ही काम है। When you see somebody is talking about something, then उसके ऊपर पूरा बोझ डालने का काम नहीं करना चाहिए। Don't do that। अरे ये कर रहा है तू, उसको क्यों नहीं मिला है, तुम क्यों नहीं मिले? सो मैं थोड़ा सा रूड हूँ इस बारे में। तो Then we have a question from Siddharth who's saying, can you explain red and blue line and no, I don't know. That Siddharth has to explain me. Siddharth Agarwal, na, right? Yeah. Siddharth Agarwal, please. I can't explain that. I'm not technical person. He himself is a riverman. I know him. Okay, great. And then, of course, there are lots of compliments saying that we lead such a blinkered view of our city. Manini says, I never knew that Basa is imported. I would prefer Indian one. So I think भाषा तो खाओ ही मत। भाषा इतना गंदे जगह पे बनता है और उसको खाना ही नहीं, मतलब वो कहीं बेसिकली भाषा कहाँ मिलता है, मतलब जब शादियों में जाते हैं वो स्टार्टर जो फिश होती है वो बासा होती है। सो डोंट ईट बासा। कोई भी इंडियन फिश खाओ लेकिन बासा मत खाना, क्योंकि उसका बहुत अनहाइजीनिक कंडीशन में उगाया जाता है वो। प्लीज या Then you have Usha asking that has your outstanding work caught the attention of the local authorities? I did not show anybody. मैं जाके किसी को दिखाया नहीं है, तो I don't see my work is outstanding, and I think local authorities already they are have a lot of wisdom and intelligence, and they know what they are doing it, and they don't know, and they what they should be doing, they don't know why they are not doing it. तो मुझे उसको समझा, उनको वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा है, और मुझे ये बताने की जरूरत ही नहीं उनको कि मतलब जाकर बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो ऐसा है। नाउ ग्रेजुअली इज बिकॉज ऑफ माय कंटिन्यूटी ऑफ मुंबई रिवर प्रोजेक्ट, मैं छोड़ा नहीं हूँ उस प्रोजेक्ट को। सो पीपल आर नाउ कॉलिंग मी ऑन द इवेंट्स लाइक दिस, एंड बिकॉज ऑफ दिस थोड़ा सा पता चल रहा है। बट अगेन आई डोंट नो, मैं ज्यादा पेसिमिस्टिक बात नहीं करना चाहता हूँ, बट ठीक है, ऐसा है। अभी मैं इसको आगे बताऊंगा तो फिर और थोड़ा हम लोग पेसिमिस्टिक हो जाएंगे, बट ठीक है। It's good we are talking. I like to interact with people to show that this is what is, and my only aim through this project is to, yeah, basically Bombay ki jo language, you know, I'm talking just not talking about the rivers. I'm also talking about the identity of Mumbai. So Mumbai is not Marathi. Let me tell you, all Maharashtrian people, okay. Mumbai is Koli. Mumbai is Warli, right? तो उनकी लैंग्वेज है, उनकी लैंग्वेज का क्या है, उसका कुछ तो काउंट ही नहीं कर रहे हम लोग। वारली में किधर कॉन्वर्सेशन हो रहा है, कोहली में किधर कॉन्वर्सेशन? देयर इज अ जमीन आसमान का फर्क है कोहली लैंग्वेज और मराठी लैंग्वेज में, राइट? एंड पीपल से कि क्या है भूमिपुत्र, आम्ही भूमिपुत्रांची पार्टी आहे। भूमिपुत्र कोण? मराठी नाहीत ते, कोळी लोक आहेत। तर तुमच्या त्यांच्यासाठी कोण काय करतच नाहीये। So we have another question by Vispi, and he says, can some of these rivers that have gone underground be retrieved? Is it possible? हाँ, उस पे कॉलोनीज बन गई है, मेरी बिल्डिंग बन गई उस पे। मैं वो रिट्रीव करने जाएगा तो मैं तो बेघर हो जाऊंगा ना। But I am living in ठाकुर विलेज, उस पे कॉलोनी हो गई है, तो अपना घर कौन चेंज करेगा? कोई भी नहीं करेगा ना। जो नहीं हुआ है उसको हम लोग को, जो नहीं उसको बचाना है, वो पहले करना है, राइट? तो आई डोंट थिंक सो। दिस सी बेसिकली दिस रिवर्स आर नेवर टर्म्ड एज रिवर्स इन बॉम्बे, दे आर कॉल्ड सीवर। उसका जो देखभाल मेंटेनेंस कर रहा है वो सीवर डिपार्टमेंट कर रहा है, रिवर डिपार्टमेंट है ही नहीं बॉम्बे में, तो उसको रिट्रीव करने का सवाल ही नहीं आता है ना। देयर इज नो डिपार्टमेंट, देयर इज नो रिवर डिपार्टमेंट इन बॉम्बे, सो देयर आर नो रिवर्स। तो रिट्रीव कौन करेगा? आई डोंट नो कौन करेगा, मेरे को नहीं पता कौन करेगा ये रिट्रीव। Can you share some light on the Nala at Valli next to Atria Mall? That is creek ना, वो creek है वो। मैंने वहाँ पे काम नहीं किया है तो मेरे को उतना पता नहीं है, बट मेरे को फोटोग्राफिकली आई यूज्ड टू लाइक दैट एट्रिया मॉल से व्हेन कोलीवाड़ा आता है वहाँ पर, दैट इज बेसिकली क्रीक। वो कहाँ आगे तक जाता है उस पर मैंने काम नहीं किया है, बट अभी वहाँ पे देयर वाज अ ब्यूटीफुल व्यू, एक ब्रिज था उधर, आई डोंट नो इफ यू सीन दैट। और व्हेन यू क्रॉस दैट रोड, तो वहाँ पे व्हेन द गोट्स वेर क्रॉसिंग दैट नाला के ऊपर जो ब्रिज है, तो मेरे को फोटोग्राफी के लिए एज ए फोटोग्राफर आई वांटेड टू क्लिक पिक्चर ओवर देयर,
कि लोग वहां पे टोपली लेके जा रहे हैं, उसका सिलवेट खींचने मिलेगा, बकरी जा रही है उसका सिलवेट मिलेगा, लेकिन वहां पर अभी कोस्टल रोड आ गया है, बन रहा है, तो वो जो सिलवेट भी है वो भी चला गया है। तो मेरे को पता नहीं है, वो फोटोग्राफ मेरे को अभी कभी मिलने वाला नहीं। तो हाजी अली तक वो कोस्टल रोड का वहाँ पे काम चल रहा है, तो वो व्यू चला गया। तो इतना ही मेरे को उस नाले के बारे में पता है। I can't put any more light on that. Yeah. And again, a lot of compliments. Somebody also says, excellent answer, sir. And the director of the MHS says, Aslam, shall we do an awareness photo competition? MHS will be happy to connect. So What is MHS? I'm going to ask them to tell us in the chat box. Maritime history. Maritime History Society. Okay. I thought my college is MHSS, Muhammad Yes. Haji Sabu Siddiq College. I'm from Yes. Sabu Siddiq College. So the Maritime History Society, they would be happy to sort of connect with you and Thank you so much, sir. take something We'll do it. forward. Yes. So I think on behalf of the Asiatic Society of Mumbai, I would like to thank you, Bombay Ka Shana. I love the name, for this presentation. Thank you so much for this eye-opening look. मैं थोड़ा कम हिलाया, मेरे को बहुत ज्यादा जोर से हिलाने का था, but I wanted this is one side. What happens now in online, there are I'm talking, and I actually stop in the middle of the presentation. I talk and I take questions and like that. तो उसमें थोड़ा ज्यादा हिलते हैं. One side में फिर उतना हिला नहीं पाया मैं. I think so. Let's see. काफी हिला दिया आपने. अच्छा, हिला दिया. So, Okay. thank you. Yeah, जोर का झटका आपने धीरे से दे दिया. और I look forward to coming to the Hallu Hallu walks, and I'm Yeah. sure so does everyone. And that is where we will really, I think, connect and walk with you and learn so much more. So I invite everybody to Dahisar River. I'm doing Dahisar River walk in January. I'll do a lot of river walks. I'm also doing कोलीवाड़ा walks. So हल्लू हल्लू हम लोग ने स्टार्ट किया. दिस प्योरली कमर्शियल है. मैं पैसे भी कमाना चाहता हूँ. मैं आई एम नॉट ये नहीं हूँ मैं, क्या बोलते उसको, आई डोंट नो, वो वर्ड नहीं आ रहा है मेरे को, बट ऐसा भी है. तो आई इनवाइट एंड यू शुड फॉलो मुंबई रिवर फोटो प्रोजेक्ट, हल्लू एंड बॉम्बे का शाना, टू गेट जो भी करंट इन्फॉर्मेशन, जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आप लोग को. थैंक यू सो मच एशियाटिक सोसाइटी एंड शर्मिष्ठा. Thank you so much. Bye-bye. Yeah, bye. Ma'am, would you like to say, yes, would you like to say thank you, or should we just end this meeting? No, I think you can give the vote of thanks, but Aslam, there are many people who wish to connect with you for these walks. Could you share how they can do it? Go Hallu Hallu is my Instagram account. Go Hallu Hallu. So Hallu Hallu is basically slowly. तो धीरे धीरे लाइफ को थोड़ा सा बॉम्बे वाले लोगों ने थोड़ा ब्रेक लगा देना चाहिए और थोड़ा रुकना चाहिए, और जस्ट बैठ के कुछ मत करो. मतलब कभी कभी ऑफिस जाओ, एक स्टेशन पहले उतर जाओ स्टेशन पे और बैठ जाओ उधर थोड़ी देर और देखो लोगों को क्या हो रहा है. दैट इज हल्लू हल्लू, सिंपल. सो गो हल्लू हल्लू पे है, halluhallu.com करके वेबसाइट है, उस पे भी जाके इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको. Yes, and you can follow Hallu Hallu on Instagram, and you can also follow Bombay Ka Shana on Instagram. Yeah. And that's the best way of keeping in touch. In touch, and knowing yeah. You what's can happening. you can take my phone number also. Yes. I can give you a phone number भी दे दूंगा मैं, चाहिए तो बॉक्स में लिख देता हूँ. So no problem anyway. Thank you so much once again. Thank you so much. Thanks a lot. Asiatic. Yeah. Bye-bye.